you have clients or what are you doing right now? अभी क्या है आपका status? I do have clients. I have international clients. 41 years of age, 14 years kid. Okay, can you believe this? Welcome everyone to IFSI Principal Talks. So today we have our student with us, Geeta Bhoyte, and she has completed nutrition course with us. उन्होंने हमारे पास nutrition course किया है. So let's talk to her कि उनका experience कैसा रहा, वो अभी what is she doing right now in fitness industry, what are her plans, okay? So let's know from her about all these things. So hi Geeta, how are you doing? I'm good. So Geeta, tell me, are you from fitness industry or you decided later on to step into fitness industry? You were working in some other industry earlier. Yes, I was working in an aviation industry initially, and I was a cabin crew. I flew with Jet Airways for almost 8 to 9 years. I was a senior cabin crew over there. So basically, you'll go to see that I was not having any knowledge about fitness, and nor I was very serious about it. But it all started when I was expecting a baby, and I had severe health issues after conceiving and also after delivery. There were many complications like deficiencies, and I had a C-section, and because of which I had to quit that industry. Okay. That's how it started. Then things went really very bad that time, and my husband, who is very supportive, he pushed me towards fitness. Even whenever I used to go to a fitness class, like a yoga class or something, I never used to do exercise. I used to sit in the class, not doing workout at all. But then suddenly it took a toll on my bone health. Okay. I couldn't walk. I couldn't do normal routine work. That's how I became very serious about fitness. I eventually started with doing yoga, having no knowledge about food, nutrition, what is right for me to eat. Okay. That's when I hired a nutritionist for myself. Okay. I did this journey for quite some time, maybe 4 to 5 years, and I got a big benefit. I was benefited with that plan. My bone issue was resolved. I couldn't breathe properly. That was resolved. Okay. That was the point. My journey of 4 years, I became very serious into fitness. But then as and when time went, I started expecting something more from myself. Okay. Something more, like this is not what I want out of fitness. That became my passion. कि मुझे सिर्फ योगा नहीं करना है, मुझे अभी और अच्छा और कुछ अलग करना है, like toned body maybe, my strength level I must improve. That's how I started taking interest into going gym. I switched on from yoga, and I think it's been past 3 years now I'm gymming. So you're into weight training? Now into weight training, because Okay. I learned from yoga is that as and when you age, women start aging, it is compulsory, necessary for each and every woman to lift weights. This is a very important point that you made. Yes. Correct. That is important. Why? We'll talk about, like, we have a premenopausal stage, like after 40s and all. I've already crossed my 40s. So we have women go through several things in her, several different changes in her body, like her anxiety, her stress level fluctuates, her hormones fluctuate. That is when weightlifting and high intensity training plays an important role apart from yoga. So that is how I switched to gym. But then after I joined gym, again I started thinking, like, this is not what I want. I want something more out of it, like a perfect knowledge about nutrition. I know what is to be eaten now by the time I joined gym, but in what quantity, what is the right food to get a well-toned body, then what are the nutritional value, what food will benefit me more.
that's what I started, expecting something more from this, from fitness journey. So then I started researching Google or several research papers I went through. I got some knowledge. I cannot say the entire detailed knowledge, but I knew the basics. Okay, we need to some calorie deficit, increase in the calories. What is the right food? But this was not what I was actually expecting out of it. Then I came across. I saw an advertisement on Google I read about IFSI Institute, which is a government certified and ETIP certified institute. So I thought like, okay, now this is it. This is what I want. So I consulted, I took an appointment and I was here in Pune Deccan area for a consultation. I am not a science background person. I am a BA graduate from economics, but I still wanted to do it because it was my interest, my passion to know more about food, nutrition. So now, you had so much of passion and you had little bit of knowledge, okay, from Google or maybe, some other studies that you read. When you approached IFSI and when, they started telling you about the course, did you have questions in your mind? Did you ask questions to the counselor, Yes. that time, the course counselor? Yes, I did. And were you satisfied with it? Yes, I had many questions. The first most important question, what was going in my mind was, I am not a science student. So how am I going to understand what they are going to teach me? Because when it comes to food, then obviously there are several chemical elements, how this works, how that works, how that food will benefit in benefit in the human body. So those scientific terms were difficult for me to understand because, as I said, that I'm a BA graduate. So initially I asked that question, that would I be able to do that, or you need only a BSc students to do that? So she explained me. I approached Yogini. Yogini was there. Okay. So she explained me in a very good way. She elaborated it, like how it works. We have good instructors like Pratik sir and all. They definitely make each and every student understand in such a way that it's a simple language. Science made so easy to understand, I can say. So that was one point. So you did it was a semi-online course, online course, what was it? No, offline? I took a complete offline course because I was not comfortable with online. Several issues like connectivity and stuff like that. And science is such a subject. Like I believe that discussing or learning it face to face in an offline class makes a big difference. So when you started attending the lectures, offline lectures, and when the initial topics were taught, you had body transformation, then you had initial, about the macronutrients, and then we spoke about the fat loss diet, or the muscle gain diet, or whatever, all these things. What were you thinking? How were you? आप क्या सोच रहे थे? Were you getting it nicely? आपको समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आपके you were asking questions. Questions को कैसे attempt किया जा रहा था? How was it? What was your experience? My experience, I would say, initially I myself found it a bit difficult to understand, but Pratik sir, such a wonderful instructor I have ever met, he used to explain it to us in a very simple manner. Like explaining it with the help of a diagram or by giving simple examples. Also, I remember there was this one chapter on muscle hypertrophy. So he explained us that particular topic in such a simple language, like by giving an example of a motorcycle or a bike. So that is how our nerves work. So it was that easy. I think it is a serious course. Food nutrition is a very serious course, and a person who has got passion will go in deep with the questions as well. Correct. So that was the thing that made easy to understand. So when there were lectures on protein, carbohydrate, fats, especially there are so many new things when it comes to dietary fat. Where we speak about trans fat,
और स्मोक पॉइंट, ऑयल का स्मोक पॉइंट क्या है, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए. सो व्हेन वी स्पीक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, व्हाट वाज योर रिएक्शन? डिड यू हैव दिस नॉलेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग और इट वाज वेरी न्यू फॉर यू? No, I did not have knowledge, but there were many misconceptions or misunderstandings and myths were cleared in that lecture. Like many people, for a very simple, आजकल common बहुत हो रहा है कि दाल में प्रोटीन होता है. So initially I used to also think, okay चलो छोले खा लो, ब्लैक चना खा लो, प्रोटीन होता है. But then when that lecture eventually started, that time you get to know what exactly each like protein, fats and carbs, what are their roles and how it is to be taken. पहले जो जैसे बाहर कहा जाता है कि दाल में प्रोटीन होता है, मतलब वो एक्चुअली लोगों को शायद पता नहीं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन. हाँ, एग्जैक्टली. ये एक डिफरेंस है. फर्स्ट क्लास प्रोटीन, चलो प्रोटीन है, कुछ अमाइनो एसिड्स है उसमें, बट वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है कि नहीं है. हाँ. अच्छा, तो वो एक डिफरेंस है. अगर वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड्स है, सेकंड क्लास प्रोटीन में क्या लैक होता है, वो सारे लेक्चर्स में डिटेल इन डेप्थ नॉलेज वो सारे चैप्टर्स में वो कवर अप होता है. एंड देन आपका जैसे कोर्स खत्म हुआ, राइट नाउ यू हैव क्लाइंट्स और व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी क्या है आपका स्टेटस? I do have clients. I have international clients as well as Indian India में अपना whatever. So you have Indian and international clients? Yes. Wow. Yes. So how many international clients? I have 3 international clients. Okay. And I have many Indian clients over here as well. But I take only serious clients. I am not me as a person, I don't work for money. चलो I took the money and बाद में नहीं कर रहा है तो मत करने दो, मुझे तो पैसे मिल गए. I'm not that type of a person. I am a very serious person who is passionate about her career and I'm very passionate about fitness. So only serious clients. जो सीरियसली करेगा, फी भरने के पहले ही आई जस्ट टेल देम दैट सी आई विल टेक द फी ओनली इफ यू आर सीरियस, अदरवाइज आई डू नॉट वांट, बिकॉज आई वांट माय क्लाइंट्स गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड. Wow. So viewers, look at this now. She is not doing this for money. Okay, definitely she is passionate about it. और वो पहले ही क्लियर कर देती कि I will take you as a client only if you are serious in following that particular diet. Let me tell you, ये बहुत कम लोगों में होता है ऐसा, but it is a nice thing what she is doing. But over a period of time, definitely उनके पास और जैसे जैसे clients आएंगे, ये word of mouth से जाता है. So this is a very important thing. और आप मुझे बताइए तो what is the difference? International clients को आप कैसे डील करते हो? क्योंकि उनका खाने का जो पैटर्न होता है that is different. Indian diet का पूरा पैटर्न अलग है. So how do you manage? मतलब उनको कैसे आप कन्विंस करते हो? क्या यहाँ के लेक्चर्स आपको वहां पर उनको कन्विंस करते समय क्या उसका फायदा हुआ आपको? डेफिनेटली एक जो चीज मैंने सीखी है न्यूट्रिशन में, व्हाट आई हैव लर्न इज इट इज वेरी सिंपल. वी हैव टू ईट सिंपल फूड, बट हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बना देते हैं. कुछ नहीं है. न्यूट्रिशन इज नथिंग बट ईटिंग राइट एंड ईटिंग सिंपल. सो ये चीज ना बहुत से क्लाइंट्स को नहीं समझ में आती. गणपति है, मेरे को मोदक खाना है, व्हाई? 3 महीना आप रुक जाओ, बिकॉज देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स जिसको 3 महीना बहुत डेडिकेटेडली करना ही पड़ता है. दे डू नॉट हैव टू ईट शुगर और व्हाटएवर. बट ये एक्सप्लेन करना उनको बहुत डिफिकल्ट जाता है. बट काउंसलिंग लेक्चर्स जो यहाँ पे IFSI में हुए हैं, उससे बहुत ही इजीली हम उनको वो एक्सप्लेन कर पाते हैं. तो मुझे एक बात बताइए, आपने अभी मोदक की बात नहीं कही एंड यू आर फ्रॉम पूना, तो गणपति फेस्टिवल पूना में तो बहुत जबरदस्त होता है. तो यहाँ पर आपने कन्विंस किया क्या लोगों के मोदक? क्या आपके पास ऐसा क्लाइंट आया कि जो फैट लॉस पर था और आपने बोला कि नहीं थोड़ा रुको, आप ये मोदक अभी नहीं खा सकते? ऐसा हुआ है कभी? हाँ हुआ है. बट मेरा एक और आई वुड लाइक टू से दैट आई वुड ऐसे क्लाइंट्स आए हैं, बट
what I always tell my clients, I always try and give them a customized meal plan. Okay. I am a foodie myself. Okay. So, I always find out that clients को जो भी उनका favorite है, like supposingly मोदक आपने बोला, तो I have find out a way. मुझे भी मोदक पसंद है. I have find out a way of how to make a healthy मोदक out of it. Wow. Okay. Like we were talking about good fats. We can make a dry fruit मोदक. हाँ, आता उकडीचे मोदक तर सगळेच खातात. Obviously it is steamed. तो उतना थोड़ा राइस का अगर आटा हम लोग ने ले भी लिया, लेकिन उसके अंदर जो हम लोग पूरा डाल रहे हैं, जो स्टफिंग है, उसको हेल्दी बनाए. मेक इट आउट ऑफ ड्राई फ्रूट्स. You can put dates also. See, nothing matters to us in a small quantity. But वही मोदक आप अगर 5, 6, 7, 8 एक ही दिन में खा रहे हो, तो that is definitely going to harm you. So here she is actually talking about we can put it in a manner where organized cheat. Okay, और एक चीट होता है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता, कि आपको क्रेविंग्स आ रहे हैं और आप बहुत खाते जा रहे हो, पुटिंग इन लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ जंक फूड, ओके, मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हो, ओके, यू आर ईटिंग लॉट ऑफ फ्लावर और और दूसरा एक होता है ऑर्गेनाइज चीट मतलब जो आप खा रहे हो वो थोड़ा सा खा रहे हो और यू आर ईटिंग समथिंग विच इज नॉट डैमेजिंग योर बॉडी सो मच और विच इज नॉट डैमेजिंग योर डिसिप्लिन. इनफैक्ट जैसे अभी इन्होंने बोला कि वो जो मोदक है जिसमें स्टफिंग उन्होंने एक हेल्दी टाइप का स्टफिंग नट्स वगैरह उन्होंने यूज किया और उसके 1-2 मोदक अगर खा लिए तो उससे होता क्या है, उससे फिर आगे का मील प्लान जो है वो फॉलो करने में द पर्सन गेट्स मोटिवेटेड. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. ग्रेट, वेरी नाइस. And about the food, regarding international clients, it's very easy. See, बाहर के कंट्रीज में इंडिया जैसे लाइक ब्रेड का एग्जांपल ले लिया, तो वहाँ पे जो फूड क्वालिटी होती है या स्टैंडर्डाइज्ड फूड के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं. सो इफ यू हमें होल व्हीट ब्रेड नहीं मिलता इंडिया में. That is the fact I can say. All the breads in India are made up of maida only, refined flour only. But if you go to see, वहाँ पे easily मिल जाता है. They have sourdough, they have whole wheat breads, they have multi-grain breads, salad तो कहीं पे भी मिल जाता है. They have lettuce, broccoli, जो अभी worldwide कहीं भी easily मिल जाता है. So it is not a rocket science to actually plan a meal for an international client. Beans भी easily मिल जाते हैं, eggs easily मिल जाते हैं. So that is how you have to play with the ingredients. That is what I do. Including pastas, I can say. Over there, if you go to see, you do get pure whole wheat pastas. So I plan the food, the meals accordingly to international whatever food availability. So like you get avocados easily. Correct. And जो कि इंडिया के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं. So avocados को easily खा सकते हैं. Avocados work the best, I can say, for whatever muscle gain or fat loss. So basically healthy fat. तो कोई ऐसा rocket science मुझे नहीं लगता. It is easy. Once you get the knowledge about calculations, about proper nutrition, then it is easy to plan. You have these clients, national clients, international clients. ये कितने समय से है अभी आपके पास? I completed this course somewhere around 2 months back. Okay. So initially, when I started off with this course, when it came to calculations in the food, that's when I started. First, I eventually started with myself. Okay. I eventually started with myself. Then later on, I got 2 clients. So once calculation part comes, in the syllabus only after you complete your proteins, your macro and micro nutrients, then it is easy. By the time you reach there, you have that knowledge as to what is to be given and how much is to be given. So that time I had 2 clients, and now it's approximately, I can say, 8 to 10 clients I have. Within a time span of 2 months. 2 months. Very nice, very good. And how did these clients, ये जो international clients हैं, national clients, yeah, definitely,
I want to know. But then international clients ने आपको approach कैसे किया? It's through social media, I can say. Oh wow! So what? How? कैसे किया? It is very simple. Like what I believe is whenever if there is a fitness coach or a nutrition coach, what people see is how my coach is, how she looks. अगर वो फिट दिख रही है तो वो मुझ पे काम कर सकेगी. अगर वो ही खुद ही फिट नहीं है तो पहले यार खुद पे काम कर ले, फिर हम पे काम कर ले. So I cannot say I am the fittest person, but people go through my Instagram profile and yes, I have a good physique, I can say. As a 41-year-old woman with a 14-year-old kid, of course. 41 years of age, 14 years kid. Okay, can you believe this? Okay, go on. So then, okay, and she does weight training. Okay. Yes. So ladies, she does weight training. She follows a diet. Okay, and she does fitness nutrition consultation. Okay. So you are still into weight training? Yes. And you ये आपने सोशल मीडिया के बारे में बोला तो सोशल मीडिया में आप अपने वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करती हूँ एंड यस वीडियोस देखकर ही ज़्यादा लोग मतलब अप्रोच करते हैं. दैट इज द बिलीव. आई मीन देयर आर सो मेनी फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते. तो एज अ क्लाइंट अगर मैं आपको अप्रोच करूँ तो ऑब्वियसली मैं पहले ये देखूंगी कि आप कैसे हैं. करेक्ट, एब्सोल्युटली. तो और वो ये जो आपने सर्टिफिकेशन किया दैट इज EREPS एफिलिएटेड वन. यस. EREPS का आपने सर्टिफिकेट Yes. इज एफिलिएटेड विद EREPS, वो वाला किया है. हाँ. ओके, तो उसका क्या फायदा मिला आपको? मतलब व्हेन यू स्पीक टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, तो या यहाँ के क्लाइंट से भी आप बात करते हो और ये EREPS के बारे में आप बताते हो उनको, ओके, तो क्या कैसे बताते हो, उनका रिएक्शन क्या होता है? उनका रिएक्शन आई मीन यस ऑफ कोर्स दे आस्क कि इसका मतलब आपने सर्टिफाइड किया है या नहीं किया है. देन वी एक्सप्लेन इट टू देम कि लाइक यू नो ये EREPS है जो बाहर के कंट्रीज में भी इसको लाइक यू नो दे डू सपोर्ट दिस एंड दे डू कंसिडर दिस सर्टिफिकेशन. सो दैट्स हाउ देन देयर आर फ्यू क्लाइंट्स हु एक्चुअली वांट टू सी योर सर्टिफिकेशन. ओके, आपका सर्टिफिकेट शेयर कीजिए. ओके. हाँ, तो हमको मतलब लाइक यू नो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दैट कि आई मीन आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके सोशल मीडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उस हिसाब से देखो. एट टाइम्स यू डू गेट क्लाइंट्स जिसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे किसी को कीटो चाहिए, किसी को वीगन चाहिए, ये भी क्लाइंट्स होते हैं. सो ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्टेड दिस कोर्स विद IFSI, I got a double benefit, I can say. I got knowledge about how to plan a meal for keto, vegan, then a diabetic person, PCOD, PCOS. So that was an add-on advantage. Before joining this institute, I personally went through many other institutes which were claiming that you know obviously they are very re-owned, I can say. I will not take the name. They are re-owned institute, but when I spoke to them in detail, they were not offering me this in-depth knowledge what IFSI gave me. Okay, so you saw the syllabus that they were offering. Yes. And you also went through the syllabus that we were offering. Yes. Yes. So there was a big difference. That's the only reason I opted for IFSI, because it has got certifications, it has got the syllabus is vast. You get detailed knowledge about each and everything. There are many like different clients. किसी को PCOD का प्रॉब्लम होता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है. So it is not only limited to fat loss or muscle gain. It is more than that. And as I told कि like you know after this what I always wanted something more. हाँ, अगर IFSI एक लिमिटेड कोर्स प्रोवाइड करता, लाइक चलो सिर्फ फैट लॉस है, तो उसके बाद then again you have that hunger to learn something more. So why not join this institute? मतलब आपको वो फायदा मिला कि यहाँ पर you get to learn all types of diets. Yes, exactly. You have the fat loss, the muscle gain, Yes. vegan, ketogenic, carb cycling. Yes, everything. Okay. और
you told me about your own condition. You had deficiencies, okay, and then you consulted a nutritionist, okay. What about your own diet planning right now, and what about the deficiencies that you were suffering from? And you started with weight training also. तो अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब कोर्स करने के बाद क्या आपने अपने डाइट में कोई चेंजेस किया, उससे आपको आपके बॉडी में कोई फर्क आया, क्या लग रहा है? After completing this course, as I told you कि ये कोर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती है जहाँ से कि ये परफेक्ट फूड है हमारे लिए. एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट गोल. हर कोई, किसी को सिर्फ वेट लॉस करने का रहता है. वो वेट लॉस कंसेप्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई. तो मैं मेरे डाइट प्लान्स जो है मैं हर महीने चेंज करती रहती हूँ खुद ही. आई एम मोस्टली इनटू कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यू कैन से. Okay. So I don't get bored of my food. Though we eat the same particular food every day, every day, we don't get bored. जिसमें I mean sometimes people tell me that she is a finicky woman. पागल है ये बहुत कॉमन है मेरे लिए. पर ठीक है, वही पागलपन से आज हम ये लेवल पे हैं और आप वो लेवल पे हो. That is the difference. So every 1 or 2 months I keep changing my diet plan, my food. Also I change my workouts. Okay. And there is one more question I had. आपने अपना तो डाइट चेंज कर लिया और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो. Any changes for your family? आपने बोला 14-year-old kid and your husband या बाकी के उनके लिए कुछ चेंजेस किया आपने? हाँ. And what is their response? पहली बात तो जब मैंने खुद पे चेंजेस लाई, that time people were shocked. Because the way I used to look 8 years back was like, I was not looking like I'm 30 years old. I was looking as if I am already 40 plus in my 30s. And when they see me now, it is a big difference. Nobody can believe that, you know, it is such a big transformation. I would say I will appreciate myself because me and my daughter, we fit in the same size of clothes. Okay. So ये difference होता है कि like, you know, you can still and trust me, whenever I go anywhere, people fail to believe me, like, you know, कि ये माँ बेटी है या ये इसकी माँ है. I mean, so that is the benefit of a proper nutrition as well as lifting weights. And are you after yoga you started doing weight training? Are you enjoying lifting weights now? I enjoy lifting weights. आपको क्या लगता है ये जो myths है बाहर, ये मेरे को मैं हमेशा पूछता हूँ, you know, all these myths which are there outside कि ladies ने weight training नहीं करना चाहिए और आपको bone density का भी problem था, तो आपको क्या लगता है, आपको कोई मैसेज देना है लेडीज को? Yes, definitely. I was waiting for this question from you, sir. I was eagerly waiting. I mean, ladies sarcastically, मैं है तो हम तो हर चीज का, हम तो वे प्रोटीन का भी बहुत वैल्यू करते हैं. तो एक चीज होती है कि यार तू देख ले ना, आगे चल के तू एकदम मैनली दिखेगी. विमेन्स में वो हॉर्मोन्स होते ही नहीं है जो मेन में होते हैं. टेस्टोस्टेरोन लेवल हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. Men have 10 times more testosterone than women, firstly. Secondly, women who fail, who do not want to lift weight, saying that, you know, I will become bulky, it is not easy to gain muscles. तो आप 2 महीने में बल्क नहीं कर पाओगे. I mean, it is a big joke. It is very difficult to gain muscle for a woman. I mean, if you go through a proper diet. तो ये मिथ है. Women's toned दिखेगी और ज्यादा खूबसूरत दिखेगी. She will never look manly unless and until वो overboard जाके कुछ करती हो. So that is the point. ये मिथ है. Women's do not look bulky. नहीं हो सकता, ये naturally नहीं हो सकता. By God's gift ही नहीं हो सकता वो. So all the ladies who are watching this particular interview,
you need to weight training. You need to weight train. Weight training is absolutely important. बोन डेंसिटी के लिए जॉइंट पेन नहीं चाहिए आगे चल के. ओके, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है. एंटी एजिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे लीन. सो यू नो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग राइट नाउ. और मुझे बताइए कि आपको नाउ यू वर इन एविएशन and you decided to come into fitness or you decided to get into nutrition part. सबसे पहले बताइए अभी आपको कैसे लग रहा है, और मुझे ये बताइए कि आपका जो मैसेज है for all those people who want to enter the fitness industry, okay, जो पहले किसी दूसरे इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में आना है. ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका पैशन था लेकिन वो उस समय में अपने पैशन को पूरा नहीं कर सके. They want to enter the fitness industry right now. And also for those people who are freshers, जो कहीं पर काम नहीं कर रहे but they want to work in fitness. And there is one more thing. You are a housewife. So you are a housewife. You are managing your house. You are managing your work. You are doing your workouts. So everything is there right now. You are managing everything. तो आपका मैसेज इनके लिए क्या है? You know, हाउसवाइफ है या कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले जो वुमेन है या जिनको पैशन है, जो फिटनेस फील्ड से है, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? पहले आप ये बताइए कि जिनको फिटनेस इंडस्ट्री में आना है तो उनके लिए आपको कोई मैसेज है, और बाद में आप हाउसवाइफ के लिए बताइए. सी आई वुड से कि जो भी सीरियस है अबाउट फिटनेस न्यूट्रिशन हो या अबाउट लिफ्टिंग वेट्स हो, उसका प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है. You just can't blindly trend follow नहीं करना है. आप nowadays we see on Instagram कि चलो मैं ये खा रहा हूँ आज, दिन से लेकर मॉर्निंग से लेकर रात तक मैं क्या खा रहा हूँ, ये आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है. तो मैं भी कभी कभी जब पोस्ट करती हूँ किसी भी फूड के बारे में या मैं ये खा रही हूँ, मेरा नेक्स्ट स्लाइड वही होता है कि दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग. इट इज नॉट फॉर यू. कंपल्सरी नहीं है कि वो आपके लिए है. वो आपके लिए कुछ अलग तरीके से काम कर सकता है, मेरे लिए अलग तरीके से काम करता है. तो उसके लिए एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच आपको हायर करना जरूरी है. रही बात जिसको पैशन है फॉलो करने की, आई वुड सजेस्ट कि मेरी एडवाइस है कि एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो, जो आपको नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो दैट सर्टिफिकेशन इज वैलिड. I think approximately 38 countries, 38 countries IFSI certification is valid in 38 countries. Correct. Is valid. So that is going to give you that benefit. So अगर कोई है लाइक नेशनल सिटीजन अपना इंडियन, तो उसको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इंडिया में ये सर्टिफिकेशन लिया अब क्या करूँगा मैं तो अब इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ. सो वो सारी चीज़ें उसको आई मीन he or she must have that knowledge कि how this certification is going to benefit them. उसके बाद रही बात हाउसवाइफ की या होम मेकर्स की या whoever is a busy person working for corporates, we can join this course online as well as offline. So no matter what, the instructors are very understanding and they are very helpful. They do help us, but like कोई भी doubt हो, they help us, they clear your doubts. So ऐसा कुछ नहीं है कि like मैं busy हूँ या मैं होम मेकर हूँ तो मैं नहीं कर सकती. It is nothing like that. और आपको लगता है कि हाउसवाइफ ने अगर ये कोर्स किया तो उनको फायदा मिलेगा? पूरी फैमिली को फायदा मिलेगा. आई कैन से वो जैसे ही लाइक बदलाव एक आता है ना, फिर तो वो सबका न्यूट्रिशन चेंज कर देगी. शी विल नो दैट कि मेरे डॉटर ने क्या खाना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने क्या खाना चाहिए. इफ ही और शी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, डायबिटीज है, कुछ भी है, तो शी नोज कि इनको क्या देना है, इनको क्या नहीं देना है. मैं ये सवाल इसलिए आपको कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये सवाल हर एक वुमेन से करता हूँ हु इज अ हाउसवाइफ. और हमारे एकेडमी में न्यूट्रिशन कोर्स के लिए मैक्सिमम हाउसवाइफ
आके न्यूट्रिशन कोर्स करते हैं। और मैक्सिमम हाउसवाइफ जो है उनका कहना ये होता है जो अभी आपने बताया, that if that lady in that particular house, that woman in the house, the housewife, if she does a course, if she understands everything about nutrition, तो उससे फायदा पूरे फैमिली को मिलता है। ऑल्सो उसके लिए एक एड ऑन बेनिफिट ये होता है कि उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड हो जाता है। She gets that platform wherein, you know, being a housewife, she can make her own clients. She can earn. She'll be self-dependent. I mean, इससे ज़्यादा और बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि शी इज़ अ होम मेकर, शी प्लेज विद द रेसिपीज, वो अपना खुद के रेसिपीज इन्वेंट कर सकती है, वही पर्सनलाइज कस्टमाइज रेसिपीज वो अपने क्लाइंट्स को दे सकती है। एंड यू नो वो एक अलग लेवल पे चला जाता है। करेक्ट। आई मीन मैं तो कहूँगी कि वर्किंग क्लास जो है उससे ज़्यादा बेनिफिट एक होम मेकर को ही मिल सकता है। Great. So it was really nice to talk to you, and this was a very nice interview, and all the best to you Thank you, sir. for your future plans. और जैसे और आपके जैसे clients बढ़ेंगे आगे, so please let us know. We'll be very happy about it. Right? Thank you, so sir. much. So thank you everyone for watching this video, and see you once again in IFSI Principal Talks with one more student. Okay, and we will also listen to their experiences. Thank you so much. Thank you.